The first international break of the season is finally over, and I honestly can't wait to see Liverpool back in action. Welcome back to my channel, The Marching Reds. मैं हूं अमन चीमा और इस वीडियो में मैं प्रीव्यू करूंगा द फर्स्ट गेम ऑफ लिवरपूल after the international break against Burnley to be played at Turf Moor. So let's start right away. थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने सीजन का. एफए कम्युनिटी शील्ड हमारी अच्छी नहीं गई, बट प्रीमियर लीग में 3 में से 3 गेम्स हम जीते हैं अगेंस्ट बोर्नमouth, न्यूकासल, आर्सेनल एंड 9 में से 9 पॉइंट्स हमारे हैं एंड वी आर द ओनली टीम जो अभी तक अपना विनिंग मोमेंटम और विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर रही है. एंड आई जेन्युइनली होप आई कैन रिपीट दिस लाइन बाय द नेक्स्ट वीक जब हम लोग एवर्टन को फेस कर रहे होंगे. एंड या लाइक आर्सेनल को खेलने के बाद और वो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट लेने के बाद, लाइक बीटिंग योर टाइटल कंटेंडर्स एट होम in an affair which was not a blockbuster one, but it needed a special free kick from our Hungarian. And so basically माहौल तो अच्छा ही है cause of the results, but every Liverpool fan inside knows कि यार इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसे ही चलता रहा लीग आने वाली है. So we need to increase our performance levels. We need to make sure that we put in a dominant performance because ये आने वाले 3-4 हफ्ते ना आपको टाइटल या यूएफए चैंपियंस लीग का कैंपेन जिताएंगे नहीं, बट डेफिनेटली डिरेल जरूर कर सकते हैं. सो अगर पहले मैच में हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, इट वुड सर्व एज अ बेंचमार्क कि आने वाले 4-5 मैचेस में हमें इस लेवल की परफॉर्मेंसेस देनी ही देनी है. आई नो लाइक it's against Burnley, like it's not one of the best teams in the Premier League. It's one of the promoted teams of this season, but that does not mean कि हम अपनी performances में कहीं पे भी lack करें. डिफेंस और अटैक में मेरे को अटैक में ज्यादा कॉन्फिडेंस है टू गेट अ गोल. लाइक आउट ऑफ ऑल द टीम्स लाइक न्यूकासल, बोर्नमouth, आर्सेनल, क्रिस्टल पैलेस, वी केप्ट अ क्लीन शीट अगेंस्ट आर्सेनल व्हिच इज फनी इन अ वे. एंड आई रियली होप दैट वी कैन बिल्ड ऑन दैट मोमेंटम बिकॉज आर्सेनल के मैच में हमें दिखा था कि बेटर डिफेंसिव परफॉर्मेंस तो थी. एंड आई जस्ट होप कि वी कंटिन्यू with that same level of performance. Unfortunately, मार्क गेही की डील ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले हम लोग नहीं कर पाए, बट आई थिंक आर्ने स्लॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया था ये सिचुएशन को कि वीव गॉट ईबू, वर्ज, जो गोमेज, Giovanni Leone, as well as Wataru Endo and Gravenberch, which I hope we don't use in that position, but who can also play in that position. So I'm really expecting a clean sheet from this game. And जैसे मैंने कहा, attack looks fluid, attack looks quite exciting, and the link up between Ekitike, Wirtz, Gakpo, Salah उतना नहीं आ पा रहा है गेम में. And I can very well understand because like हम लोग अपने dynamics और tactics थोड़ा सा लेफ्ट साइड ऑफ द पिच पे कर रहे हैं. लाइक लास्ट सीजन की बात करूं तो नॉट इवन लास्ट सीजन, लाइक लास्ट कुछ सीजन्स की बात करूं व्हेन वी हैड अ सर्टेन नंबर 66, ही यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ पासेस टू साला. और आजकल ऐसा लग रहा है कि साला है या नहीं पता ही नहीं लग रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट काफी लोगों ने उसको नॉट डिसरिगार्ड बट क्या कहते हैं साइन ऑफ करना शुरू कर दिया कि भाई मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. बट जहां तक मैं देखता हूँ एंड जहां तक मुझे लगता है मोहम्मद साला इस सिचुएशन को देखेगा, he would be like, you know what, I'm playing for the champions of England who are competing for the title again, who are competing for the Europe's biggest prize in the Champions League. I just have to remain in the game for as long as possible. And उसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि he was talking to Arsene Wenger on understanding what makes players good and better, like what makes great players even more greater. So he said that irrespective, तो like Arsene Wenger ने उससे कहा था कि irrespective of the game and like irrespective how they've been playing in the game, top players stay in the game mentally till the last minute. And I think that is what stuck with him. And अगर आप हल्के से glimpses देखो, like Bournemouth के खिलाफ he got a goal right in the end and he got an assist for Rio Ngomua's, got the name finally, goal against Newcastle. वो भी बहुत लास्ट मिनट था. लाइक कुछ लोग
इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई वुड से कि वो एक्चुअली डोमिनिक सोबोस्लाई का असिस्ट था. बट मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई इवन इन दोज लास्ट मोमेंट्स, having not been involved in the game, Mo Salah still looks in that zone, at least mentally. तो जहां तक players और team की overall morale की बात है, I think we are in a good space and the results have definitely helped us. So we should head into this game with lot more confidence and yeah, we should be scoring a few goals. Like I would be surprised अगर हम लोग 1-0 sort of a score line पे जीते. But don't get me wrong, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ अगर हम लोग 1-0 जीते. But all I'm trying to emphasize is that I'm expecting a dominant Liverpool performance, a clean sheet and a few goals. Score predictions पे भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में. Lineups की बात करें तो I see Alisson starting in goal, which is a no-brainer. अब मैं लेफ्ट बैक से शुरू करूंगा. कर्केज हैज टू बी देयर. वर्जिल वैन डाइक नेल्ड ऑन. इबू कोनाटे नेल्ड ऑन. अब राइट बैक पे आई मीन फ्रिम्पोंग looks to be recovered from his injury, but I don't think he's fully fit enough to play 90 minutes. Conor Bradley आ रहा है धीरे धीरे. He's also regaining his fitness back. He played a game in the international break also, so that is good sign. But there is another right back who wasn't a right back 2 games ago, who scored a free kick, and I will be shocked to see him start in that position because I honestly want him to move in the midfield, which is Dominic Szoboszlai. And my personal preference would be to start with Conor Bradley, and if we can get a 60-70 minute performance out of him, then we can get Frimpong on and then also start regaining his fitness. So I would want to see Dominic Szoboszlai in the midfield and definitely not at the right back. So I would go with Conor Bradley in that position. Midfield की बात करें, again यहाँ पे भी थोड़े से options हैं, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे. Curtis Jones has been ruled out of the game, so unfortunately he won't be available for us. And if I'm remembering it correctly, I think he got a knock against Arsenal, so I think उसकी इंजरी तब से ही linger on कर चुकी है. But in the midfield, I see Gravenberch, McAllister, and I would start with Szoboszlai instead of Wirtz, because there's a big game in the midweek coming up against Atletico, and I think Wirtz का उस game पे start करना becomes a little more important for Liverpool. So I just feel that Wirtz आएगा, but शुरुआत में it has to be Dominic Szoboszlai regaining his number 10 role in a way, and that is what I am expecting. And attack Salah, Ekitike, Gakpo, and unfortunately मेरे हिसाब से Isak ये गेम स्टार्ट नहीं करेगा. He will be on the bench and I will be ecstatic when that moment comes जब उसका नंबर 9 का साइन ग्रीन में आएगा and then he comes on to the pitch for the first time as a Liverpool player, and वो भी एक काफी satisfying moment होगा because to see the British record transfer signing come for you, play for you as the number 9. I mean, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, it was a dream signing for us and it would be a dream moment whenever he steps onto the pitch as a Liverpool number 9 player. बर्नली की बात करूं, बर्नली ने 3 मैचेस खेले हैं और अपना एक होम मैच जीता है अगेंस्ट सनडरलैंड. 2 अवे मैचेस थे, they lost against Tottenham. They gave a good fight to Man United and ended up losing right at the end, and it was a Bruno Fernandes penalty unfortunately for them. Game कैसे होगा? Burnley it's known for being very defensively solid because उनका championship में जो the reason why they got promoted to the Premier League was based on their defense. So I do see them going in a low block maybe and making it difficult for us, and like बहुत सारे experienced players भी हैं वहाँ पे, like Kyle Walker, former Man City player, and Dubravka, like he's a decent goalkeeper according to me, and Armand Broja भी वहाँ पे है, Esteve करके वहाँ पे है. So they've got good players, good decent enough players, but I think given the gap in the quality of Burnley players and Liverpool players, we should find the right tools and like the right tactics to overcome this hurdle. So I'm expecting कि ठीक है भले थोड़ा सा 15-20 मिनट हमें टाइम लगेगा to settle in the game, but as soon as the game goes on, it should be the Reds from Merseyside
who should be looking much more in control and be dominant on the pitch. Scoreline predictions, again, I'm not a big fan of these, but I'm expecting a lot of goals and I'm expecting a clean sheet also, ताकि it gives a good start to the next set of games that we have coming up. And last season की बात करूँ तो this was the first game after the international break that we lost, which was against Nottingham Forest, and that was at home, and that was a shocker because not because we doubted the quality of Nottingham Forest, but it just looked like as if कि यार एकदम से ये क्या हो गया. So I just hope that Arne Slot is much more ready, and इसमें hope वाली बात नहीं है. Like I just need to correct myself here. I am pretty sure Arne Slot will be ready, and yeah, I'm expecting a Liverpool win, and yeah, I think इस गेम की playing 11 would also depend on like what Arne Slot is thinking कि like वो midweek against Atletico Madrid जो एक काफी difficult fixture होने वाला है for Liverpool, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी जीते, but उस टीम के खिलाफ what sort of lineup is he looking for, वो हल्का सा तो दिखेगा बर्नली के प्लेइंग 11 में, बिकॉज ही वुड वांट कि भाई उनको रेस्ट भी उतना ही मिले प्लस थोड़े मिनट्स भी मिल जाए. सो जैसे फ्लोरियन वियर्ट्स हो गया, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट, सो आई थिंक ही विल प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द मिडवीक गेम, जो कि उसका भी प्रीव्यू आएगा. सो मैं बस बर्नली की बात कर रहा हूँ. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिवरपूल विन एंड आई होप वी कंटिन्यू आवर विनिंग स्ट्रीक एंड वी एंडेड द last Premier League game week on top of the table, and by the time we end up playing this game, we would be a little bit down because like you've got Chelsea playing, Arsenal playing before us. So yeah, it would be a nice way to tell all the other teams that ठीक है भले ही Burnley away हो, because mind you, Burnley away is a very tricky game, like which is the same case for every away game in the Premier League. Even for those fans, they would want to hunt for a big team, and I just hope हम वो बिग टीम ना हो. आप सिटी को हराओ, आर्सेनल को हराओ, बिंदास हराओ, मैं भी सपोर्ट करूंगा, बट बस ये फिक्सचर निकले. सो नाउ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑन हु यू थिंक लिवरपूल शुड अनाउंस एज देयर प्लेइंग 11. Do you think Isaac would rather start and give an early sub off rather than what I expect him to do, which is come on late in the game? Do you think Florian Wirtz will start? Do you think Dominic Szoboszlai will start at the right back? ये काफी इंटरेस्टिंग पोजीशंस हैं जिसमें I would love to know your thoughts, and let me know your score predictions. Let me know how you are looking at this game, and if you've liked this content, do let me know by liking this video, chiming in with your comments, and subscribing to my channel. I will see you in the next one. Till then, take care.